Welcome back, all of you. This is video number 4 of module number 1, and hopefully, this is going to be the last video of this module. And in this video, we are going to cover the last type of communication, which is mass communication. So, let me share my screen again and show you where we left. So, first of all, just to give you a brief background, we were discussing different forms of communication, and I told you that the last one that we'll discuss will be mass communication. The reason being that that is the most important form on which the entire course will be based on. So, interpersonal, we know, is a communication that happens within your interpersonal is communication that happens between two or in some ways more than two people, but it's interactive and mostly face to face, and these people are in varying relations to each other. Then intrapersonal communication is something that happens within our own selves. It's our own self-talk. It's communication which is happening internally. Then extrapersonal communication is something that we do with non-human entities, with environment, with pets, with uh, perhaps some inanimate objects, but that is still communication. Then we have group communication where there are three or more than three people in a setting where they are perhaps assigned certain kind of tasks. It could mostly be formal, but it can also be informal kind of a communication. When you are sitting on a dinner table talking to your family members, that is not really a formal one most of the time. So that is group communication. And finally, we have this mass communication where the communication is happening at the mass level. So, what does we really mean when we say that communication is happening at mass scale or at mass level? So, we will be looking at all of that now. So, mass communication is a process by which we communicate with a larger group of people through mass media. This is again the simplest definition of mass form that you can learn, that it is a process just like all other kinds of communication were a process by which we communicate with a large group of people. So there have to be a lot of people, uh, so that we have to communicate with them by using any kind of mass media. You know, the term media itself is something that was mentioned in the linear model, or that was kind of, present there in the linear model of communication that we discussed in the very first video, that whenever a communicator is communicating to somebody, that person needs a channel, and the channel is going to be media, right? And usually, or medium. So usually the medium is our tongue or our voice that we are talking, or our words that we are writing. But when we have to talk to a lot of people, we will be needing some kind of technological intervention through which that message should be delivered to all those people. And those technology is basically medium or media as we usually call it, because we use all those mediums to make sure that our message gets across to a lot of people. So we do see that television is there, or radio is there, or internet is there, and all of them are models or modes of mass communication. So this is a process where we are going to be communicating with a lot of people, a larger set of people through mass media. Then communication in which messages are transmitted to many people through print and electronic media. Again, these are different definitions taken from different books. So probably this was given at the time when there was no digital media, but nonetheless, it's a communication. It's that way it's an incomplete definition. Let us look at another one. It says that mass communication is the term used to describe the academic study of various means by which individuals and entities relay information to large segments of the population all at once through mass media. So here they are trying to define it as an academic field of study, which it is because we are studying mass com. So uh, the idea is where individuals and entities, not just one person, but entities or large organizations, they relay information to even larger segments of the society through the use of mass mediums. Let us look at some scholarly definitions as well. So the first one is by Dennis McCuell, and what McCuell has said that the term mass media indicates the entire systems within which messages are produced, collected,
transmitted, received, and responded to. So if somebody asks you to really define how mass media works, so this is a good definition to refer to, that it basically talks about all the systems where messages are. They could be any messages, news or entertainment or anything. Your Facebook status be, they are produced, they are selected, they are transmitted, they are received, and then they are responded to. Because if you will see any kind of mass communication happening, this is exactly how it happens. That the message is kind of produced, it is, written somewhere, it is visualized somewhere, somebody shoot it, and it also gets selected by different media companies, or maybe in case of news, the news producer would select which news to on air and which not to. Then it is transmitted through cable television, through satellite, through OTT platforms, and all these things. Then it is received. People who receive it, watch it, like it, dislike it, and that liking or disliking is basically the response that they would give to that production, right? So that is how any kind of mass media works, whether it is newspaper or whether it is a television program or whether it is some show on an OTT platforms like Netflix or Amazon Prime. So that is how it really happens. So this is quite a wholesome definition that way, because it still relates to the kind of media that we have currently. Okay, then another definition, this one says that mass communication comprises the institutions and techniques by which specialized groups employ technological devices like radio, TV, press, films to disseminate symbolic content to large, heterogeneous, and widely dispersed audiences. So one important thing that this definition talks about is that institutions basically are responsible to communicate, not always individuals, but institutions. Now, this is something which is not very relevant these days, because right now, even if being an individual, I want to talk to thousands of people, I will be employing some kind of a technique anyway, but I cannot call myself an institution. I can just open a YouTube channel like this one and talk to thousands of people. So, nonetheless, they talk about the institutional techniques by which specialized groups employ technological devices to disseminate symbolic content. They are saying that the content which is being on air on every kind of media is symbolic. It means something. Ideally, वही बात है कि generating meaning ही उनका final तरीका है. So if they are generating messages to buy a certain kind of a brand of soap, they actually mean that eventually people are going to buy and will gain profit. और अगर आपको प्राइम मिनिस्टर जो है वो हर 2 महीने बाद आके कौन सा खिताब करते हैं, so उसके पीछे मीनिंग है, because he wants people to understand what he's saying and then act accordingly. So symbolic context hota hai, and it is basically the end receivers or the audience जो है वो हमारी बहुत ज़्यादा large और heterogeneous होती है, widely spread होती है, because it's mass com. यहाँ पे 50 लोगों का या 100 लोगों का ग्रुप नहीं है. यहाँ पे जो चीज आपको मीडिया पे नजर आ रही है, आपको पता भी नहीं कि वो कौन कौन देख लेगा, चाहे उनके लिए वो मैसेज डिलीवर भी नहीं किया गया, but still since it's media, so they would be able to watch. Now let's look at a few characteristics of mass com. What are the important characteristics that we should be looking at? Okay, so the first one is quite evident. In mass communication, there is large audience and there is wider reach. I don't think so I need to explain it further, but just in case you are confused, यहाँ पे आपके receivers जो हैं वो thousands भी नहीं, millions की तादाद है, ठीक है? और इसकी रीच बहुत वाइड है. टेलीविजन पे जो कुछ भी चल रहा है वो पूरी दुनिया में देखा जा सकता है. रेडियो पे भी जो आ रहा है वो पूरी दुनिया में देखा जा सकता है. आप इंटरनेट पे जो कुछ भी लिख रहे हो, इवन तो आप अपनी प्राइवेसी सेटिंग्स भी लगा के लिख रहे हो, बट इफ यू चूज टू, you can show it to thousands of people. So there is a wider reach, and that is why it is very successful. Then the direct messages towards relatively large, heterogeneous, and anonymous audience. So the messages हम provide कर रहे हैं through mass media is basically messages जो कि बहुत ज़्यादा large, heterogeneous और anonymous audience को जा रहे हैं. So even if we know कि हमारी target audience क्या है किसी भी message के लिए, किसी भी communication के लिए, we don't really know them कि वो कौन लोग हैं. Exactly नहीं हमें पता होता. Like हमें कुछ आइडिया होता है, like if you are going to post a video on Instagram and you are a business
यू हैव अ बिजनेस प्रोफाइल ऑन इंस्टाग्राम, तो आपको थोड़े बहुत डायनामिक्स तो पता चल जाते हैं कि डेमोग्राफिक क्या है, किस सिटी से कितने लोग दिखने वाले हैं, बट दैट डजंट मीन कि कोई एक मैसेज जो किसी ब्लॉगर ने पाकिस्तान में बैठ के कोई ब्लॉग बनाया है उसको कोई बंदा जो है वो अफ्रीका वाला नहीं देख सकता, क्योंकि जब वो अपना इंस्टाग्राम खोलेगा और अगर वो स्नैपचैट पर क्लिक करेगा तो हो सकता है उसको मैसेज नजर आ जाए, वो देख ले, उसके लिए वो इंटेंडेड भी नहीं था, बट स्टिल दैट पर्सन वुड सी। So you really don't know exactly कि आपकी ऑडियंस क्या है, that is why it is called anonymous. Then rapid distribution and delivery. Now mass media is ठक वाली communication. Not कि बाकी communication इतनी जल्दी वाली नहीं है, but considering the fact कि इसमें इतनी technology लग रही है और जिस तरह technology तरक्की कर रही है, वो distribution का method उतना ही rapid होता जा रहा है. Initially we used to have newspapers जो कि हमें एक दिन की पिछले पूरे दिन की खबरें बताते थे. उसके बाद टेलीविजन आ गया जिसमें पीटीवी वाला दौर, जिसमें आपको एक सर्टेन टाइम पे खबरनामे में खबरें पता चलती, और अब हमारे पास 24 आवर्स 24/7 वाले चैनल्स हैं जिसमें हमें ये पता चलता है कि कब कैसे क्या क्यों हुआ है, फौरी तौर पे ब्रेकिंग न्यूज, सबसे पहले ये न्यूज एक्सप्रेस न्यूज ने दी, सबसे पहले खबर जियो ने चलाई, एंड ऑल दीज थिंग्स बहुत जल्दी जल्दी पता चलता है. एंड इवन उससे भी रैपिड ये है कि इवन बिफोर सम टेलीविजन चैनल एंड कैमरा पर्सन वुड रीच टू अ प्लेस जहां से शायद लाइव कवरेज करनी है, कोई भी बंदा जो वहां पे खड़ा हुआ है और उसके हाथ में मोबाइल है, वहां से अपनी लाइव वीडियो बनाना शुरू कर देगा. सो वी डू सी थिंग्स एज एंड व्हेन इट हैपेंस. सो रैपिड डिस्ट्रीब्यूशन है, साथ साथ सब कुछ नजर आ रहा है. इसकी सबसे बड़ी एग्जांपल होती है व्हेन यू सी दीज लाइव ट्रांसमिशन, जैसे कि आप लाइव क्रिकेट मैचेस देखते हो. सो दैट इज अ प्रोसेस जहां पे साथ साथ सब कुछ जो है वो जो हो रहा है वो आप तक पहुंच रहा है थ्रू सैटेलाइट. So that is one of the characteristics of mass communication. Okay, then another one says that messages are transmitted publicly and then there is no privacy. Again, this is something that I would say कि मैं इससे totally agree नहीं करती अब, क्योंकि somehow अगर publicly messages transmit होते हैं, but with the advent of digital media and all these different social media that we have, media platforms, social media platforms that we have, privacy compromise तो हो रही है, that I agree with, but आप choose कर सकते हो. So you can choose who will see your WhatsApp status, right? You can choose privacy settings for your Facebook posts, right? And there are some other platforms as well. So all these things are kind of changing with the passage of time, but generally, as far as television is concerned, movie making is concerned, newspaper is concerned, messages are transmitted publicly. The next one says that there has to be some form of message reproduction. In mass communication or in mass media, messages are or can be reproduced quickly as compared to any other forms of communication. Generally, in an interpersonal setting, आपने एक दफा कोई गलत बात कह दी है, आपके मुंह से निकल गई है, किसी ने सुन लिया है, शायद बुरा भी मान जाएगा, लेकिन आप उससे बाद में सॉरी भी कर लोगे, बट वो रिप्रोड्यूस नहीं हो सकती क्योंकि उसने सुन लिया और आप उससे मूव भी कर सकते हो, जो अक्सर बाद लोग मुकर जाते हैं बात कहके. सोशल मीडिया पे, मैस मीडिया में ये नहीं हो सकता. कुछ गलत बोला है टेलीविजन पे तो वो पूरी दुनिया ने सुन लिया, वो रिकॉर्ड हो गया है, अब सुन लिया और वो अब रिप्रोड्यूस होगा, वो बार बार चलेगा, राइट? यू रिमेम्बर रिसेंटली देयर वाज दिस television show, not very recently but back in March, there was this television show जिसमें Marvi Samad was there and Khalid Rahman Kamal was there and he literally abused Marvi Samad on television. So वो उस वक्त लाइव चला गया और उसके बाद जो है इवन उन्होंने जब अपनी वीडियो अपलोड की चैनल ने यूट्यूब पे, इफ यू गो बैक एंड सी द एग्जैक्ट डेट और एग्जैक्ट प्रोग्राम, तो वो वाला पोर्शन उस वीडियो में नहीं है, बट सिंस क्योंकि वो उस वक्त चला गया था तो कुछ लोगों ने रिकॉर्ड कर लिया और वो बार बार जो है वो वीडियो वायरल हुई एंड एवरीबॉडी कुड सी इट. यू ऑफन सी दैट कि कोई सेलिब्रिटी या कोई पॉलिटिशियन कोई ट्वीट कर देता है जो थोड़ा गलत किस्म का होता है, तो वो उस वक्त फौरी तौर पे डिलीट तो कर देते हैं 1 मिनट के अंदर अंदर, लेकिन लोग उसके स्क्रीनशॉट्स ले लेते हैं क्योंकि वो मैसेज रिप्रोड्यूस होता रहता है. सो अब मास कॉम जो है उसमें ये सिस्टम नहीं है कि जो बोल दिया तो अब हमने बस बोल दिया और हम उससे फिर जाएंगे. इट इज गोइंग टू बी देयर. सो मैसेज रिप्रोडक्शन इज एन इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मास कॉम. A very interesting thing is that it costs low to the consumer. जो इन मैसेजेस की प्रोडक्शन की कॉस्ट होती है वो हमेशा प्रोड्यूसर को ज्यादा पड़ती है. अगर मुझे रोज खबरनामा पढ़ना है तो मैंने एक चैनल बनाना है, उसके लिए आई वुड नीड करोड़ ऑफ रुपीस, राइट? बट जो कंज्यूमर्स हैं उनको उतनी कॉस्ट नहीं पड़ेगी.
specifically Pakistani context में तो we actually don't pay for anything to be honest, but generally even अगर आप subscription based models भी देखो तो जो production value होती है उसके मुकाबले में तो कुछ भी नहीं होता, it's just peanuts. So you are not really paying for anything. What you are paying is कि अपने smart जो स्मार्ट टेलीविजन है उसका बिल पे कर रहे हो, अपने मोबाइल के इंटरनेट का बिल पे कर रहे हो एंड ऑल, बट जो लोग मैसेजेस प्रोड्यूस कर रहे हैं ऑफ कोर्स इट इज गोइंग टू कॉस्ट देम मोर. तो समहाउ द कंज्यूमर्स को कॉस्ट जो है वो लो पड़ती है. एक मूवी बनाने वाले को जिसने एवेंजर्स बनाई है उसको तो मिलियंस ऑफ डॉलर्स का बजट है, बट व्हाट यू आर डूइंग इज दैट यू आर जस्ट पेइंग दैट 500 rupee to watch that movie. Of course eventually that person, the communicator, is going to earn all the money back and even more, but that is another story. But bahral consumers ko low cost padti hai. Then another characteristics is that mass communication involves good deal of selection. That is, medium chooses its audience and audience chooses the medium, which means कि जो media है, जो भी medium आप use कर रहे हो अपना message पहुंचाने के लिए, it will choose its audience naturally. For example, illiterate people cannot read newspaper. Somebody can read it out to them, but they cannot read it. So naturally वो medium ही ऐसा है that entails that everybody who would be using this medium would at least be literate enough कि वो उर्दू या इंग्लिश पढ़ सकता, right? या जो भी किसी भी लैंग्वेज में वो न्यूज़पेपर आ रहा है. And the same goes vice versa. The audience is also going to choose the medium, right? Because that illiterate person is not going to buy a newspaper if he cannot read it. He will probably go on go for television or listen to the radio, right? So the audience also has the choice to choose the medium. If I'm a person who likes to read news about politics and what is happening in Pakistan, it's my choice. If I want to check all of that on Twitter, if I want to watch PTV, or if I want to go and check radio, or if I want to see the different private channels that are there. So the choice is there, and there is a lot of choice, which makes the entire process very interesting, also very complex. Then mass communication is usually done by social institutions which are responsive to the environment in which they operate. Okay, this is again something which you will find in books, but this is again something जो कि अब वक्त के साथ साथ change हो रहा है. So when they say this is done by social institutions, they actually mean the media houses themselves. So social institution could be a television channel, it could be an institution जो कि maybe कोई NGO और वो लोगों को पोलियो से बचाव के टीके लगवाने के लिए अवेयरनेस कैंपेन चला रहे हो. सो दैट्स एन इंस्टीट्यूशन जो कि उसके लिए एक एडवर्टाइजिंग कैंपेन रन करेंगे, राइट? एंड दे आर ऑलवेज रिस्पॉन्सिव टू द एनवायरनमेंट इन विच दे ऑपरेट. दैट इज ट्रू, ये अनट्रू नहीं है, बट ये चेंज भी हो रहा है बिकॉज अब जो है environment जो है वो globalized हो गया है. Because of the digital technology, everything is globalized. So if somebody who might be sitting at USA और वो मे बी एंटरटेनमेंट के ऊपर जो है वो अपना कोई कंटेंट बना रहा हो, तो जरूरी नहीं है कि वो बंदा यही सोचे कि मेरी ऑडियंस जो है वो यूएसए में ही है. वो बंदा ये भी सोच के बना सकता है कि मेरी ऑडियंस वर्ल्ड वाइड है. If we know that sitting in Pakistan, we do have a whole bunch of people जो कि वो BTS or whatever उनके पीछे पागल है. So why is that? They are not really making songs for us. वो तो अपनी लैंग्वेज में अपने लिए बना रहे हैं, but we are loving them. And if US में बैठे या जर्मनी में बैठे या यूरोप में बैठे लोग नुसरत फतेह अली खान की म्यूजिक के पीछे पागल थे, तो उसकी वजह ये नहीं है वो जनरली उनके लिए म्यूजिक नहीं था, बट उसकी रीच बहुत ज्यादा है. सो समहाउ दैट ये जो चीज है कि जी मीडिया सिर्फ वो चीजें दिखा रहा है जो कि आप जिस एनवायरनमेंट में हो उसी के से रिलेटेड है. That has kind of changed now. If you want to look into it further, you can perhaps check all the case studies and all the articles which have been recently published about this Turkish series, Ertugrul, because you will see that their audience was not Pakistanis, but it was dubbed, it became very popular on Netflix, then it was dubbed again in Urdu, and now it is on PTV, and everybody is seeing that. और हमारी अम्मा पागल हो गई है उसके पीछे, बिकॉज उनका इंटेंशनल मीनिंग ये नहीं था. सो जरूरी नहीं है कि आप हमेशा यही सोच के चीज बनाओ कि किसके बारे में. ऑफ कोर्स ऑडियंस डिफाइन करनी पड़ती है, बट दिस इज समथिंग जो कि अब वक्त के साथ साथ बहरहाल चेंज हो रहा है. द मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक इज द फीडबैक. इसको भी मैंने इटैलिक्स में कर दिया. सो बोथ दीज जो इटैलिक्स में है वो मैंने मेंशन कर दिया, बट
what I would suggest you is to read more on that, because these are changing and we can see कि ये characteristics as such वैसे नहीं रहे जैसे मे बी आज से 20 साल पहले थे. So इसमें traditional approach पहले mass com में ये थी that mass communication जो है वो mostly one way होती है, two way नहीं होती, interactive नहीं होती, indirect होती है, नॉन एग्जिस्टेंट और डिलेड फीडबैक होती है. ठीक है. सो द ट्रेडिशनल अप्रोच इज के इट्स नॉट इंटरेक्टिव एंड द फीडबैक इज either there is not going to be any feedback or either there is going to be delayed feedback. But here we are talking about the times जब फीडबैक देने का कोई जरिया ही नहीं था. न्यूज़पेपर आता था और आप पढ़ लेते थे सुबह फिर कल के दिन में क्या क्या इंपॉर्टेंट खबरें थी. बड़ा किसी का न्यूज़पेपर में फीडबैक देने का दिल करता होता था तो वो लेटर टू द एडिटर लिख लेता था, जो भी हजारों में से कोई 5 लोगों के सिलेक्ट होके न्यूज़पेपर में पब्लिश होते थे. बट नाउ दैट हैज चेंज्ड बिकॉज नाउ क्या है, नाउ इज दैट विद ऑल दीज न्यू मीडिया टेक्नोलॉजीज फीडबैक इज वेरी इमीडिएट. यू कैन नाउ ट्वीट डायरेक्टली एट समवन, यू कैन यूज द हैशटैग, और जो भी आपने देखा है या जो भी आपने सुना उससे रिलेटेड आप अपना ओपिनियन फौरी तौर पे दे सकते हो. इवन ऑन टेलीविजन जहाँ पे अगर रिकॉर्डेड शो भी चल रहा है तो उसमें भी यू विल सी दैट यूजुअली दे हैव एन ऑप्शन जब लोग कॉल करके जो है वो अपनी फरमाइशें कर सकते हैं या क्वेश्चंस पूछ सकते हैं. रेडियो में भी कॉल इन शोज होते हैं और अगर कुछ ना भी हो जो उसका इंटरेक्टिव ना भी लगे आपको तो यू विल सी दैट यू हैव ऑल दीज ऑप्शन सोशल मीडिया पे जिसपे आप फौरी तौर पे फीडबैक दे सकते हो. तो यू वांट हैव द ऑप्शन कि हामिद मीर का शो कैपिटल टॉक में आप उससे डायरेक्टली बात करके फीडबैक दे दो. उस शो में ऐसा कोई सेगमेंट नहीं होगा, बट आप उसके ट्विटर पे जाके जो है उसको ऐड करके आप जरूर लिख सकते हो कि आज का शो बहुत अच्छा था या बहुत बुरा था या व्हाटएवर, राइट. सो अब ये भी चेंज हो गया है. सो दीज 2-3 थिंग्स इन द लास्ट आर समथिंग that I want to say कि वो characteristics अब तक रह गए हैं, because just like every other form of communication, mass comm has also evolved a lot, and specifically this one has evolved a lot because इसमें technological interventions की से काफी changes आई हैं. But nonetheless, these are a good way to at least understand कि characteristics पहले क्या थे और अब क्या है. Now let us look at the differences of mass communication with all other kinds of communication, the one that we have already discussed so far. So the first thing is that in mass comm, the sources or the sender of messages don't really know the individual members of the mass. This is something which I have already told you कि आप interpersonal में सामने वाले से बात कर रहे हो, आपको पता है आप किससे बात कर रहे हो, बट आप टेलीविजन पे बैठ के जो बात बोल रहे हो वो आपको नहीं पता कि कौन कौन सुनेगा. So आपको individually लोगों का नहीं पता, right? Receivers are physically separated from each other and share no physical proximity. That is again a very interesting thing because the receivers are something जो खुद भी आपस में एक दूसरे को नहीं जानते हैं. So a person sitting in Lahore loving this Ertugrul is probably a person जिसका तुर्की में ना तो कोई रिश्तेदार है, ना कोई फ्रेंड है और ना कोई और है, and both of them are in love with the serial एक साथ, right? So जो आपकी ऑडियंस है वो भी एक दूसरे को नहीं जानती है mainly, and they also don't even share a physical proximity. So एक कोई भी चीज हो सकती है, एक मूवी हो सकती है जिसको पूरी दुनिया में पसंद किया जा रहा है, तो जरूरी नहीं है कि रिसीवर जो हो वो भी एक दूसरे को जानते हो. तो लार्ज और हेटेरोजेनस ऑडियंस है. Individual members forming a mass may not have any social organization and no established set of rules or structure. This is an extension of the last thing, that the mass is something जिसका जरूरी नहीं है कि कोई एक स्पेसिफिक ऑर्गेनाइजेशन से वो लोग बिलोंग करते हो या एक स्पेसिफिक किस्म के कल्चर या सोसाइटी के ही लोग हो. हम लोग जब मास को कम्युनिकेट कर रहे हैं, so that is your large wide audience. It could be a person sitting in Lahore, it could be a person sitting in Madagascar, or it could be a person sitting in Namibia, and all of them might be loving the same thing because आपको नहीं पता, ना तो प्रोड्यूसर को पता है कि उसकी चीज की कितनी ज्यादा रीच हो सकती है, और जो मैसेज है, जो कंटेंट है in itself, that will kind of define how people are going to like it or dislike it. So receivers or communicators generally एक दूसरे को नहीं जानते हैं in this kind of a communication. Then another important difference is that in mass communication, the sender or the communicator act as the gatekeeper of information, while the receivers might be manipulated as well. How does that happen? Now that is something very important because जितनी भी mass comm की काफी theories हैं, जैसे कि agenda setting theory या gatekeeping theory, वो इस चीज को address भी करती है. If I am a person who is doing who is involved in any kind of mass communication,
आई कुड बी एन एंकर पर्सन जो कि टेलीविजन पे शो कर रहा हो. सो मुझ तक जो इन्फॉर्मेशन पहुंच रही है मैं आप तक पहुंचा रही हूँ, बट उसमें से कुछ चीजें होंगी जो मैं रोक सकती हूँ, बिकॉज शायद वो सोसाइटी के लिए बुरी हो, शायद वो किसी ऐसे बंदे के बारे में हो जो मैं ना चाहती हूँ कि आगे उसके बारे में बात पहुंचे. और अगर मैं सब कुछ बता भी दूँ तो हो सकता है आगे सेंसर हो जाए. एक गेट कीपर नहीं होता, काफी गेट कीपर्स होते हैं, राइट. गेट कीपर इज समबडी हु विल बेसिकली शट द डोर डाउन इफ दैट पर्सन वुड फील कि ये इन्फॉर्मेशन आगे नहीं जानी चाहिए. तो दैट कुड बी द चैनल का मालिक, राइट, द ओनर ऑफ द चैनल. दैट कुड बी पैमरा, व्हिच इज एन ऑर्गेनाइजेशन जो पाकिस्तान का सारा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया देखती है. सो गेट कीपर्स होते हैं इन्फॉर्मेशन के. और समहाउ अदर इन्फॉर्मेशन को इस तरह भी डिजाइन किया जा सकता है, थोड़ा रोक के, थोड़ा बता के, या इस तरह से विजुअलाइज करके कि ऑडियंस जो है वो मैनिपुलेट हो, उनकी जो थिंकिंग है वो चेंज हो. एंड इन अदर वर्ड्स व्हाट वी कॉल प्रोपेगेंडा, और हम कहते हैं ना मीडिया प्रोपेगेंडा करता है. दिस इज व्हाट दिस डिफरेंस बेसिकली टॉक्स अबाउट, दैट थ्रू मास मीडिया ऑडियंसेस कैन बी मैनिपुलेटेड. एक फिल्म मेकर भी अपनी पोर्ट्रेयल से मैनिपुलेट कर सकता है चीजों को. वो किसी विलन को इस तरह भी प्रेजेंट कर सकता है कि वो आपको हीरो लगने लगे. केस इन पॉइंट इज जोकर, अ पर्सन हु बेसिकली किल्स पीपल, बट उसकी इस तरह से पोर्ट्रेयल दिखाई जाती है दैट वी काइंड ऑफ फील सिंपैथी फॉर दैट कैरेक्टर, राइट. सो मैनिपुलेशन होती है मीडिया मैसेजेस में, दैट इज वेरी कॉमन. Then another thing is that communication scholars who focus on mass communication and media often take a critical approach in order to examine how media shapes our culture and who is included and excluded in various mediated messages. So when we talk about mediated messages, these are the messages जो के clear cut पहुंचाने की बजाय उनको तोड़ मरोड़ के पहुंचाया जाता है, मीडिया के थ्रू उसको चेंज कर दिया जाता है, hence they are called mediated messages. So generally communication scholars जो हैं, even you can do that you can focus on के mass com के थ्रू या मीडिया के थ्रू जो है वो किस तरह जो है कल्चर शेप हो रहे हैं, किस तरह सोसाइटी शेप हो रही है, चेंज हो रही है, ठीक है. किसी तरह कुछ ग्रुप्स को स्टीरियोटाइप कर दिया जाता है, किसी तरह कुछ कम्युनिटीज को मार्जिनलाइज कर दिया जाता है, किसी तरह कुछ लोगों को सेलिब्रिटीज बना दिया जाता है, या किसी तरह कुछ कंट्रीज को जो है वो हीरोज बना दिया जाता है और बाकियों को जो है वो इस तरह प्रेजेंट किया जाता है एज इफ they are not good people to live with. So all these things are important, and these are the things that, of course, when those of you who will eventually go and do your majors in mass comm, there would be subjects, courses that would be dealing with all these things. But for now, that would be too much for us to discuss. But just as a side note, you must look at these things whenever you are watching something media पे. हमेशा कोशिश करो कि ये जरूर देखो कि इसके पीछे कोई मकसद तो नहीं है, ये चीज अगर इस तरह पोर्ट्रे की जा रही है तो क्यों पोर्ट्रे की जा रही है. Now the next is functions of mass communication. The first thing is inform, of course. मीडिया ना हो तो हमें इंफॉर्मेशन ही ना मिले चीजों की. ऑल दीज थिंग्स, चाहे वो आपकी कोई एप्स हो, या वो आपका टेलीविजन हो, या वो आपका रेडियो हो, ट्रेडिशनल या डिजिटल मीडिया, दोनों का मकसद होता है आवाम को इन्फॉर्म करना. Next thing is to instruct and educate. It also helps in educating the masses about different things. A case in point can be the latest COVID-19 situation, जहाँ पे media has been used to educate people, to educate us about कि मास्क पहन के निकलना है, इसकी ट्रांसमिशन किस तरह होती है, आपने बाहर जाके सोशल डिस्टेंसिंग करनी है. तो अगर मीडिया ना हो तो इस चीज के लिए बड़ा मुश्किल हो लोगों को एजुकेट करना. और जिन इलाकों में जनरली मीडिया नहीं होता या फार ऑफ एरियाज में, तो जनरली यू विल सी कि वो डोर टू डोर जाके लोगों को अवेयर करना पड़ता है. तो मास मीडिया का मकसद ये होता है कि वो इन्फॉर्म करे, आपको इंस्ट्रक्ट करे और educate करें. Right now, if you will be watching this video on YouTube or any other source, so of course I am trying to deliver my lecture through this medium. So that is the function that I am instructing you and I am educating you. Entertain, of course, entertainment. That is the basic function of mass communication as well. We all watch television or movies or listen to music on radio or otherwise as well. Just to get entertained. Okay, so entertainment is a huge function. Then another word is to influence and persuade people. That is the same thing that I was talking in the last slide. That somehow the persuasion is also required. जब कोई advertiser जो है वो आपको
अगेन करोड़ों में एक स्पॉट खरीद के टेलीविजन पे अपनी प्रोडक्ट एडवर्टाइज करता है दैट दिस इज द न्यू मोबाइल फोन, तो दैट वुड मीन के वो आपको पर्सुएट कर रहा है बाय दैट मोबाइल। तो इन्फ्लुएंस करना भी एक मकसद होता है थ्रू मीडिया। Then one other function which I really hope that all of the media should actually perform is to foster consensus, creativity, and understanding amongst people, groups, and societies so that they can live in peace and harmony. एक तरफ तो हम ये भी कहते हैं कि मीडिया प्रोपेगेंडा कर रहा है, पर उसका फंक्शन प्रोपेगेंडा करना नहीं है, सिर्फ उसका फंक्शन तो यही है कि वो लोगों में पीस एंड हार्मनी क्रिएट करे। इफ टुडे व्हाइल सिटिंग इन योर रिस्पेक्टिव होम टाउन्स आपको जो है पूरी दुनिया की इन्फॉर्मेशन मिलती है और आपको हर मुल्क के कल्चर के बारे में काफी इन्फॉर्मेशन है, सो यू रियली नो कि कोरियंस का कल्चर क्या है, एंड यू आल्सो नो कि जी यूएस का कल्चर क्या है, एंड यू आल्सो नो कि सऊदी अरब में कल्चर क्या है, एंड यू आल्सो नो कि इंडिया का कल्चर क्या है, यू नो ऑल ऑफ दैट थिंग। सो समहाउ अगर वो एक पीस और हार्मनी एटलीस्ट अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो रही है बिटवीन डिफरेंट कल्चर्स, or somehow or other I also feel that globalization with media has played the biggest role because that has helped us to really look at different people and different cultures. If I have to travel to a new country, I'll probably check its videos or see a drama from that country or a movie from the country in order to familiarize myself about that place, and I'll go on different websites and forums to check the information कि वहाँ पे कौन सी लैंग्वेज बोली जाती है, किस किस्म के कपड़े पहने जाते हैं, all of that. So media is helping you out with all these things. So this is one of the functions. This is made possible through debates and discussion, cultural promotion and integration, and of course overall जो है जब हम कंसेंसस और क्रिएटिविटी की बात करते हैं तो उसमें कल्चरल प्रमोशन, इंटीग्रेशन, डिस्कशन, डिबेट्स, ये सब कुछ मीडिया पे होती है जिसके थ्रू ये सब चीजें हम अचीव कर सकते हैं। अब वो अचीव हो रही है या नहीं, दैट इज अनदर डिबेट बिकॉज मीडिया एट द सेम टाइम प्रोपेगेंडा भी बहुत करता है, बट जनरली द फंक्शन शुड बी दैट इट शुड डू all of that. Okay, so these are a few functions of mass communication. I'm sure all of you already know about it, but it's better if you can look further and search about these things, and you will find out even more. So that is the end, but before we go, just a brief recap of what we have discussed in this 4 or 5 videos. I have actually lost the track, sorry, but in this module, so that was the module number 1, हमने डिस्कस की फंडामेंटल्स ऑफ कम्युनिकेशन। सबसे पहले भी डिस्कस प्रोसेस communication in itself है क्या, जिसमें I told you that there is this very simple definition that it's a process of generating meaning, of sending and receiving verbal, non-verbal symbols and signs that are influenced by multiple contexts. So that is what the communication is all about. We also explain the process through the linear model of communication, that it's a process in which who says what, in which channel to whom, with what effect. Okay, so these are the major factors that are involved in that process. We briefly touched upon the timeline because you have to do the reading to know exactly how the communication has evolved over the years. But we briefly discussed the timeline as well in these videos. Then we discussed types in detail. So we discussed 5 types of communication. First was interpersonal, which is between 2 people, or could be 3, 4 as well, but it is basically two-way communication and very interactive, and people are in varying roles and relationships to each other. Then we discuss intrapersonal, is the communication which happens within our own selves. Then we discuss extrapersonal communication. It's the communication that happens between human beings and non-human entities. Then we discussed group communication, in which communication happens between 3 or more people, and generally they have a shared identity or they have a common purpose to achieve. And finally, we discussed mass communication, where you are going to communicate with a lot of people, a large group of heterogeneous people, by using mass media. So that is what your mass communication is. Of course, we discussed its characteristics, its differences with the rest of the communication types, and we also discussed the functions of mass communication. So these slides will be emailed to you along with the video, so you can go back and check all these things. Of course, there are certain links which are also mentioned in the slide. So if I have given you a video to watch, do watch it, because that will clear your concept even more. And even after that, if you have any questions, you are more than welcome to ask that. Assessments for this module, as I told you, each module is for 20 marks. So there are going to be 2 assessments for this module. First is the quiz. That will be for 10 marks, and this will be an objective type quiz. So
every quiz which will be of 10 marks will be an objective type quiz. So I'll ask you MCQs or match the column or true or false kinds of questions. Fill in the blanks could also be there, right? And उसमें आपका course है that these slides and videos and all the lectures that are included, reading be included, right? So उसमें से भी questions होंगे. Questions are not going to be very clear cut that define communication or something like this. So I might give you an example and then you have to put up, for example, if I say that you talking to a friend on WhatsApp chat is an example of blank. So you will know that it's an interpersonal communication. Another thing which I told you in the last live session was that I will be sending you unique links for quiz. So there is no point in sitting with each other and attempting the quiz. Assignment होगी 10 marks की, and this is going to be a fun assignment because इसमें आपने कोई communication type explain नहीं करनी. What you have to do is really find out कि communication अच्छी किस तरह आप कर सकते हो. And you have to choose 2 public figures that you really like and you really admire for their communication skills, right? And you have to make a short video clip. And if you don't want to appear on camera, you can make an audio clip, audio recording, in which you will talk about those 2 personalities and what exactly do you like them as like in them as communicators. Mention 2 public figures, could be anybody, politicians, sports persons, showbiz ki personalities, singers, anything, anybody, right? So even motivational speakers and whoever you like. So you can choose any 2 public figures and you have to give a response. And of course, the assessment is going to be on how well you have responded on that. और आप उनके बारे में कितना जानते हो और according to you आपको जो उनकी चीज अच्छी communication में लग रही है वो वाकई में communication skills में required होती भी है या नहीं. I mean, you cannot say that I really like. I should not put anybody's name, but I really like person XYZ because he or she takes very good selfies. Because में public speaking की बात ही नहीं आ रही है, तो वो बात करनी है जहाँ पे public speaking की बात हो, right? So this will be a fun assignment since this was the first assignment, so I've kept it kind of easier for you. This is how this entire module will be assessed. So again, if you have any questions, you can post them on Moodle, you can post them on the Facebook group, you can write them on email, or you can post them here in the comment section, and I'll respond to you as soon as I can. With that, we have reached the end of our module 1, and now I'll see you with more live session and more videos, and I'll keep you posted about this as well. So thank you everyone for listening to me.